हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। तो यहाँ पर हम 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताया था कि हम उसको यूनिट सर्कल के ऊपर डिफाइन करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, और जो उनकी वैल्यूज हैं क्वाड्रेंट के अंदर, उनके साइन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो उन्हीं के ऊपर कुछ बेस्ड एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 ये क्या पूछे हैं? इफ दिस cos x is just equal to -3/5, एंड इन्होंने बोला कि दिस x इज लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हैं, उनको हमें फाइंड करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर दिस सेम एक्स, है ना, इस एक्स के लिए। ओके, सो लेट्स राइट द सॉल्यूशन। तो क्लियरली हमको पता है कि हमारे पास कॉस एक्स जो है -3 और वैल्यूज जो सारी की सारी हो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। हमको एक चीज पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास केवल tan और cot, जो उसका रेसिप्रोकल है cot, वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। इनके अलावा और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होते हैं। जैसे कि cos निगेटिव होगा, cos का रेसिप्रोकल हमारा sec होता है तो sec निगेटिव होगा, sin निगेटिव होगा और cosec निगेटिव होगा। तो आइए जरा देख लेते हैं हम जस्ट स्टार्टिंग। तो हमारे पास कॉस गिवन है, तो हमको क्या निकालना है? साइन निकालना है, tan निकालना है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है, कॉसेक निकालना है। ये पांच जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनकी वैल्यूज को देखना है। तो सोल्यूशन लिखते हैं। तो सिंस कॉस एक्स इज जस्ट इक्वल टू -3/5, तो यहाँ पर जो आपका सेक है वो आसानी से लिखा जा सकता है। तो यू कैन सी वी हैव दिस sec x क्या होता है? 1/cos of x, so you can just put it here, 1/ minus का 3/5, and it will be equals to -5/3, क्योंकि हमारे पास cos निगेटिव है तो ऑब्वियसली sec भी निगेटिव वैल्यू देगा। नाउ हमारे पास आइडेंटिटी हमको पता ही है, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इज विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं कि वी कैन राइट हियर दिस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, एंड कॉस एक्स की वैल्यू तुम्हें पता है, दिस इज माइनस ऑफ, दिस इज 1 माइनस of -3/5 का होल ऑफ स्क्वायर, एंड देन यू कैन सी 1 minus 3 3 is 9/25, and that will be equal to, this is your 25 minus 9/25। तो 25 minus 9 तुम्हारे पास होता है 16 divided by 25, and then you can see कि जो हमारे पास साइन होगा, साइन ऑफ एक्स, that will be equal to plus minus root of 16/25, yeah, you can see is equals to plus minus 4/5। ओके, तो हमारे पास साइन एक्स की दो वैल्यूज निकल रही है, एक प्लस में निकल रही है और एक माइनस में निकल रही है।
अब अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हमें साइन चेंज चुनना होगा। तो साइन की वैल्यू +4/5 भी हो सकती है और माइनस का 4/5 हो सकती है, बट बिकॉज एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो यहाँ पर वैल्यू कौन सी लेंगे हम लोग, निगेटिव वाली लेंगे। ओके, यू कैन से हियर since this x is lies in third quadrant, you can write here the sign of x is negative, obvious सी बात है, तो negative होता है, you can write here in the solution, and therefore the sign of x is just equal to -4/5। तो ये तो साइन की वैल्यू हो गई। जब साइन की वैल्यू आ गई तो कॉसेक की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। तो दिस implies you can say this cosec of x is just equal to 1/sin of x, and that equals to 1/ साइन की जगह पर हम माइनस का 4/5 फिर से लिखेंगे, एंड वी विल गेट -5/4। क्लियर? तो हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन थे उनकी वैल्यू तो निकल आई, इवन दो चार निकल आई या तीन निकल आई, क्योंकि सेक हमने कैलकुलेट कर लिया, साइन कैलकुलेट कर लिया और कॉसेक कैलकुलेट कर लिया। अब इनको आसानी से हम निकाल सकते हैं, अदर जो टू बचे हैं। तो फर्दर यू कैन सी, फर्दर वी हैव, हमें फार्मूला पता है tan ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो दिस tan x इज जस्ट इक्वल टू sin x अपॉन cos x, और यू नो दैट साइन इज व्हाट, माइनस का 4/5, और जो कॉस है वो तुम्हारे पास क्या है, माइनस का 3/5। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4/3। ओके, दिस इज योर tan x। एंड अगर हम बात करें cot ऑफ x की, तो cot x इसका रेसिप्रोकल होता है, यू कैन से दिस इज cos x अपॉन sin ऑफ x, है ना। और cos x का मतलब है माइनस का 3/5, सिमिलरली दिस इज माइनस का 4/5। तो यू कैन से दिस इज इक्वल टू 3/4। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, दिस इज cot ऑफ x इज इक्वल टू 1/tan ऑफ x, है ना। और सिंपली यू कैन राइट दिस इज 1/4/3, एंड यू कैन जस्ट से इज इक्वल टू 3/5। ओके, तो दीज आर द अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनकी वैल्यूज हमको मिल गई। तो हमारे पास बी क्लियर हेयर कि हमारे पास सेक तो पहले ही मिल गया था, तो वी गॉट द सेक इज हेयर, एंड साइन फिर तुम्हारे पास मिला, फिर हमारे पास कॉसेक मिला, and then we got this tan of x and cot x that is equals to 3/4। Okay, so if they are given, we calculate that values in the first, second, or third quadrant. We already remember where it is plus sign or minus sign, and after conversion of 90 minus theta and 90 plus theta, where it will be good to also know about it। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 की बात करते हैं। हियर वी आर टेकिंग दिस f, दिस इज cot ऑफ x, यहाँ पर cot x की वैल्यू दी है, दैट इज इक्वल टू माइनस का 5/12, एंड x lies in second। आपकी जो हमारे पास वैल्यू दी है x, वो कहा है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका वैल्यू निगेटिव आता है। जैसे कि ओके, कॉट एक्स, अभी अगर हम बात करें साइन एक्स, तो साइन एक्स कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो लेट अस सी हाउ इट विल कम्स। ओके, so they are asking about the values to find
the values, find the values of other 5 trigonometric functions. Trigonometric functions. ओके सो आसान होता है, आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटी है उनको इस्तेमाल कर लिए, क्लियरली आप देख लीजिए कि चीजें हमारे पास आ रही कि नहीं आ रही। तो आइए जरा राइट लिखते हैं सोल्यूशन। तो सिंस वी हैव नो दैट इज cot of x is just equal to minus का 5.12. ओके तो वी हैव tan x is just equal to what? It will be reverse reciprocal होता है, so it means the reverse the this minus 5.12, it will be 12 upon minus 5. You can say minus का 12 upon 55. Okay, so this is the tan x. Okay, अब हमारा tan तो निकला है, cot भी था, तो अगर हमको sec निकालना है तो we will use the formula. Now this sec square x plus का 1 is equals to okay, so sec square x is just equal to what? 1 plus tan square of x. Clear? So this equals to 1 plus का tan क्या है तुम्हारे पास? 12 upon 5 minus का whole of square is just equal to 1 plus 144 upon 5 is just equal to, it will be 25. So this will be 25 plus का 144 divided by 25. So what will you get? This implies this sec square x is equals to 169 upon 25. So it will be taking the limit, that is sec of x is just equal to root of 169 upon 25, and it will be plus minus. This implies the sec of x is just equal to plus minus 13 upon 5. Now हमारे पास सेक की दो वैल्यू जा रही है प्लस माइनस, बट वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कॉसेक और सेक निगेटिव होता है, कॉट एंड ओके, so this will be it will be negative. So this implies जो sec की वैल्यू हो जाएगी in the second quadrant, the sec x is just equal to negative. It means sec x is equals to minus 13 by 5. Okay, so minus 13 by 5. Okay, so now we can say here, since x lies in second quadrant, the sec of x will be negative. Okay, therefore you can say the sec of x है, that will be your minus 13 upon 5. Okay, which also gives this cos x is equals to
minus 5.13. Okay, क्योंकि cos x वो cos x है, that is equals to minus 5.13. So further we have sin x is equals to, you can say this is your tan of x into cos x, and this is your minus 12.5 into, we are multiplying, minus 5.13. Okay, and it will get minus minus plus, this is your 12/13. Okay, so and we can say, okay, तो यहाँ पर जो हमारे पास sec and so what they expecting that equals to cos sec x just equal to 1 upon sin x, and that is equals to 13/12. Okay, so we ओके, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे। और अभी आप एग्जांपल्स को उनके जो वैल्यूज दी हुई उनसे क्वाड्रेंट पहचाना जाता है, तो क्वाड्रेंट के अंदर मतलब पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे आप पढ़ते रहिए और भी स्टूडेंट को शेयर करते रहिए। ये जो कंटेंट है जो मैथमेटिक्स है वो आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, तो आप यहाँ से मैथमेटिक्स को फॉलो करके अपनी एक्सरसाइजेस को बहुत आसानी से आप कर पाओगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। फॉर द लर्निंग आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच।